Hello students, how are you? I hope you all are good. So today's topic is what? What we are going to learn about the punctuation marks and capital letters. So what is punctuation? So punctuation marks indicate pause that are used in written text to separate sentence or to separate a part of sentence from another to convey a clearer meaning. Look at these words. What are you looking for, Neha? What do these words mean? Do they mean this? What are you looking for, Neha? Or this? What are you looking for, Neha? और this? What are you looking for, नेहा? तो आपने देखा कहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क पुटअप किया है ना, फॉर दिस के लिए. तो ऑब्वियसली इफ द राइटर एंड he wanted the meaning to be clear, he should not have left out the marks of punctuation. So main marks of punctuation. The main marks of punctuations are full stop, comma, semicolon, colon, marks of interrogation, marks of exclamation, inverted commas or quotation marks, dash, brackets, apostrophe and hyphen. So we'll start from the full stop. The full stop or period indicates the longest pause. It is used to mark the end of an assertive or an imperative sentences. Ocean are full of water. So assertive sentence, do a kind deed every day. Imperative sentence, after abbreviations and initials as Mr. K.C. Sharma and Mr. Kailash Chandra Sharma. So MA के लिए Master of Arts, MP Member of Parliament, RMS Railway Mail Service. तो आपने देखा यहाँ पर हमने कहाँ पर यूज किया है फुल स्टॉप का. नेक्स्ट इज द कॉमा. द शॉर्टेस्ट पोज के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे? कॉमा का यूज करते हैं. इट शुड बी यूज्ड वेयर एवर वी थिंक वी नीड अ पोज. However, the following points should be helpful in understanding the use of comma. The comma is used to separate words in series. I got apples, oranges and cake for you. The trains on the routes are fast, comfortable and punctual. All the rooms in this house are small, dark and dingy. To separate a direction quotation from such construction, as he said, she replied. Madan said, will you come for a picnic? I love to, replied Rahul, but I am afraid I am not free. To set off certain words or phrases like however, moreover, in fact, as a matter of fact, of course, in short, finally, etc. Well, it is surprise to meet you here today. In short, he is a reliable person. Of course, I should have won the race if I had really tried. As it happens, however, I never saw her again. A car ran into a lamppost, however, none of us was seriously injured. To set off words used in addressing people के लिए. Do come in, Priya, and be seated. How are you, Rahul? Vivek, what are you doing? To separate clause where a pause is needed in reading. This is usually the case if an adverb clause comes first in a sentence. तो देखते हैं यहाँ पर बच्चे. He tried very hard, but they couldn't force the door open. Though we stayed late, we got home before 10. Since I had so much work to do at home, I didn't have time to come. To mark off phrases containing a participle, जैसे कि seeing, seen, when a pause is required in reading. Delayed by bad weather, the plane took off 2 hours late. Putting down the newspaper, I walked over to the window. To separate a question tag from the rest of the sentence, he hasn't come, has she? You know this phone number, don't you? तो यहाँ पर हमने क्या किया? सेपरेट किया क्वेश्चन टैग के साथ, है ना? सो नेक्स्ट है हमारा सेमीकोलन. The semicolon mark is a greater pause that than indicated by a comma. It is used to separate coordinate clauses if they are joined by such conjunctions as and, but, for, either, neither, therefore, else, otherwise as. I have no education, therefore I cannot get a job.
to separate lengthy coordinate clauses where the coordinate conjunction is omitted, as the rain fell in torrents, the sky was dark, the road was deep in mud, the way was long, the weary travelers plodded on in silence. To separate clauses for the sake of emphasis के लिए, for example, she wants money to spend, friends talk to, a car to drive about, a nice house to live in. To separate a series of loosely connected clause के लिए, today we love what tomorrow we hate. Today we seek what tomorrow we shun. Today we desire what tomorrow we fear. So to कहाँ पर नेक्स्ट के लिए है टू सेपरेट करने के लिए क्लोज को ऑफ कंपाउंड सेंटेंस में व्हेन दे कंटेन कॉमास. एग्जाम्पल के लिए ही वॉज अ काइंड लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम. नेक्स्ट है हमारा कॉलन. सो कॉलन को पढ़ेंगे. द कॉलन शोज अ शॉर्टर पॉज देन अ फुल स्टॉप बट अ लॉन्गर पॉज देन अ सेमीकोलन. इट इज यूज्ड often used with a dash after it, as it is used to introduce a quotation or speech. For example, we all know the proverb time and tide wait for none. Before example, enumerations and explanation, as some of the important towns of India are Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. To separate two sentences when one is used to explain something in connection with others, as study to acquire a habit of thinking, no study then that is more important. To separate two contrasted sentences, to err is human, to forgive divine. So next है बच्चे mark of interrogation के लिए. The note of interrogation is used instead of full stop after a direct question, as have you taken your dinner? When did you come? नेक्स्ट है एक्सक्लामेशन मार्क के लिए. सो एक्सक्लामेशन मार्क कहाँ यूज करते हैं? द नोट ऑफ एक्सक्लामेशन इज यूज्ड आफ्टर इंटरजंक्शंस, एक्सक्लामेटरी फ्रेजेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए. कैसे? ब्रेवो, हुर्रे, ये कुछ वर्ड्स है हमारे, है ना. नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स. Inverted commas or quotation marks are used to enclose the exact words used by the speaker, as the teacher said hard work is the key to success. तो यहाँ पर exactly use हुआ है. Next है dash. The dash is used to mark a break in a sentence. He saw many people, doctors, engineers, architects at the conference. Before or after a list. He bought eatables, chips, cookies, nuts. फिर हमने क्या यूज किया? डैश का यूज किया and took them house. Next है brackets. The parentheses or brackets are used to enclose a phrase, clause or sentence which does not grammatically belongs to it, as Amar with due respect to his billions with a swindler. Next है apostrophe. Apostrophe कहाँ पे यूज करते हैं बच्चे? To show possession के लिए. For example, the boy's book, the child's football. तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? पोजेशन को शो कर रहे हैं. फुटबॉल किसकी है? चाइल्ड की है. बुक किसकी है? बॉयज की है. Short form to show where we have left letters, as I'm going out, she isn't free, we have bought a car. तो यहाँ पर क्या है? फॉर्म को शॉर्ट करने के लिए, है ना. आई एम पूरा ना लिखकर हमने क्या लिखा? आम. और ऐसे ही हमने इज नॉट को फुल नहीं लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिखा इजंट. नेक्स्ट है हाइफन. Hyphen is used to join the parts of a compound words as mother-in-law, passer-by, onlooker. To separate the fractional part written in words 1/3, 3/7 उनके लिए भी हम हाइफन का यूज करते हैं ना. जैसे 1 और 3 के बीच में हमने हाइफन यूज किया है, 3 और 7 के बीच में भी हमने हाइफन यूज किया है. नेक्स्ट है द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. हमने कैपिटल लेटर्स का कहाँ कहाँ पर यूज करना है तो वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. सो अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू बिगिन अ सेंटेंस.
ठीक है, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है देन यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर। द अर्थ इज अ प्लेनेट, तो यहाँ पर टी जो है वो हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में टी को कैपिटल बनाया है। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री की हर फ्रेश लाइन के साथ भी आप स्टार्टिंग जब करेंगे तो फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ चेयर इन द मार्केट प्लेस सिट्स अ स्टोन जेंटलमैन विद स्टोन फेस। नेक्स्ट है टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम देम, कोई भी आपका प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव के साथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई, अमेरिका, अमेरिकन, इंडिया, इंडियन, द इंग्लिश लैंग्वेज। टू राइट द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, आ, alas, my God. For all nouns and pronouns referring to God as the Almighty, the Lord, His will. To begin names of days, months, season, title of books, names of places and of particular things, public institutions and all important words in a heading as Tuesday, December, summer, Sindbad the sailor, Hora Bridge, St. Helens School, Life and Indian Farmer. To begin a proverb or a quotation के लिए, for example, the proverb says honesty is the best policy and quotation क्या है, time once lost is lost forever. To begin words of titles and degrees as Dr. Badrinath, the late governor and vice chancellor. To begin the names of important historical events के साथ, जैसे the French Revolution, the Great War, etc. To begin the names of communities and political parties के साथ, like Muslim, Hindu, Sikh, Christian, the Indian National Congress, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी. To begin personalized object के साथ, like death, save me, oh life, what are you? So extra fact भी पढ़ लेते हैं. The full stop will guide us where to stop so that the listeners can understand the speaker's view well. तो यहाँ पर फुल स्टॉप क्या दिखाता है कि हमारी लाइन कहाँ पर खत्म हो रही है ना, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अच्छे से समझ पाएं कि नेक्स्ट सेंटेंस अब आने वाला है. तो ऐसे ही हमने पंक्चुएशन मार्क्स को और कैपिटल लेटर्स को कहाँ पे यूज़ करना है वो हमने यहाँ पे सीखा है चैप्टर के अंदर. तो स्टूडेंट्स चैप्टर को अच्छे से थोरोली पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.